Good morning, students. Welcome back to your English class. So, students, in today's English class, we are going to start with the new unit number 13 from your English grammar textbook. The unit number 13 from English grammar textbook. The title of this unit is am, are with ing form of verbs. So, in this unit, we are going to learn the use of ing form of verbs. Basically, we are going to learn how to write the sentence in present continuous tense. हम इस चैप्टर में इस यूनिट में सीखेंगे कि ing फॉर्म जो होता है वर्ब्स का वो कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ing फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस को कौन से सेंटेंस बोलते हैं? उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं. कौन सा टेंस होता है उनका? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. Present continuous tense tells us that the event or the action is currently happening, मतलब it is currently going on. Present continuous tense हमें ये बताता है, जो भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है वो ये बताता है कि जो भी कार्य है, जो भी क्रिया है, एक्शन है, वो अभी चल रही है, मतलब अभी कर रहे हैं. जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं मैम का, तो आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग अ वीडियो बिकॉज यू आर वॉचिंग इट करंटली, है ना. आप अभी तक देख रहे हो, देख के पूरा नहीं हुआ है, यू आर करंटली गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस. दैट्स वाई यू विल यूज ing फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच. वॉच का होगा वॉचिंग. आई एम वॉचिंग अ वीडियो, ऐसे करके. सो वेन एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन in current time or whenever the event is happening currently, then we make use of present continuous tense. And to write the sentence in present continuous tense, we make use of helping verbs is, am, are. present tense है ना, present continuous. present tense है इसलिए क्या आएगा? is, am, are. And continuous, that is why we will use the ing form of verbs. So present, to write the sentence in present continuous tense, we make use of helping verbs is, am, are. is, am, are क्या है? helping verb. And along with these helping verbs, we make use of ing form of our verb. जो main verb होता है, जो action word होता है, उसका ing form use करते हैं. And you already learned the use of is, am, are, है ना. in unit number 5 we already learned the use of is, am, are. Now we will learn the use of is, am, are with the ing form of verbs. Okay, so basically ing form क्या होता है? What is ing form of verb? ing form of verb means the base form of your verb plus ing, it makes the ing form. आपका बेस फॉर्म जो भी ओरिजिनल वर्ड है, एक्शन वर्ड, उसके आगे ing जोड़ने से क्या बनता है? ing फॉर्म ऑफ वर्ब बनता है. जैसे ईट, ईट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना. ईट बेस फॉर्म है, ओरिजिनल वर्ड है, उसके आगे ing जोड़ दो, ईट प्लस ing. ईटिंग, ईटिंग इज द ing फॉर्म ऑफ ईट. स्लीप, स्लीप मतलब सोना, स्लीप प्लस ing, उसके आगे ing जोड़ देने से क्या बनेगा? स्लीपिंग. सो स्लीपिंग इज द ing फॉर्म ऑफ स्लीप. ड्रिंक प्लस ing, ड्रिंकिंग. तो ड्रिंकिंग क्या बना? ing फॉर्म. रीड प्लस ing, रीडिंग क्या बना? ing फॉर्म ऑफ वर्ड रीड. रीड इज अ बेस फॉर्म एंड रीड का ing फॉर्म बनेगा रीडिंग. टॉक प्लस ing, टॉकिंग. So talking is the ing form of the verb talk. Talk is the base form. Walk, walk plus ing, walking. So these are nothing but the ing form of the verbs. तो आपको पता चल गया किसी भी बेसिक वर्ब का या बेस वर्ब का ing form कैसे लिखते हैं. Just you have to add ing after that word, then you can write the verb in the ing form. And when we supposed to use the ing form? We supposed to use the ing form of the verb while writing the sentence in continuous tense. हमें ing form verb का कब लिखना होता है? verb का ing form हमें लिखना होता है जब हमें continuous tense में sentence लिखना होता है. continuous tense मतलब जो भी कार्य हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, जो भी क्रिया अभी तक चल रही है. to write the sentence about the action or about the work which is happening in that time,
or which is happening in the present time, then we make use of present continuous tense. Okay, और present continuous tense है, that is why we will make use of helping verbs is, am, are. Present continuous होगा तो is, am, are आएगा, and past continuous होगा तो was and were आएगा, because we make use of helping verb was and were. was were का भी सीखा है ना, use of was and were in unit number 6. We make use of helping verbs was and were to describe about the past tense or to describe about the past time. Past tense में कोई sentence लिखना है तो हम was were का use करते हैं. So when you have to write the sentence in past continuous tense, we make use of was, were plus ing. But to write the sentence in present continuous tense, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस राइट करने के लिए या बोलने के लिए वी मेक यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर अलॉन्ग विद द आईएनजी फॉर्म. इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज टू राइट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस tense. Okay, and we already learned the use of helping verbs is, am, are in the unit number 5. I would like to revise it one more time. So when we make use of helping verb am का use कब करते हैं? When there is a pronoun I, after pronoun I we make use of helping verb am. जैसे I am writing a poem. आप I वाले pronoun के साथ with the pronoun I we make use of helping verb am, है ना? I am reading a book. I am eating a banana. I am riding a cycle. तो I के साथ हमेशा क्या आता है? helping verb am. In present continuous tense, if there is a pronoun I, we make use of helping verb am. Next, is. Helping verb is. When we use helping verb is, if the pronoun is he, she, it, he या she या it, इन तीनों में से कोई भी एक pronoun आता है तो we make use of helping verb is. And for the singular nouns we make use of helping verb is. Singular nouns जैसे bird, apple, banana, cycle, है ना? Singular कोई भी एक चीज़ है कोई भी या एक वस्तु है कोई भी, तो उसके साथ helping verb क्या आएगा? is. या एक person है, एक व्यक्ति है, जैसे मनीषा तो आएगा is. मनीषा इज रीडिंग अ बुक. स्वाति इज सिटिंग ऑन अ सोफा, ऐसे करके. बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, ऐसे करके. तो सिंगुलर नाउन्स के साथ वी मेक यूज ऑफ helping verb is. And also along with the pronouns he, she, it, we make use of helping verb is. Now the third helping verb which is being used in the present tense is are. So we make use of helping verb are along with the pronouns like you, we, they. If there are pronouns like you, we, they, we make use of helping verb are while writing the sentence in present continuous tense. You are very sweet boy. You are a nice person, ऐसे करके आप बोलते हो. या you are eating banana, ऐसे करके. We are going to play in the evening. They are writing some letters, ऐसे करके. And for plural nouns also we make use of helping verb are. After the plural nouns we make use of helping verb are. For example, plural nouns मतलब if there are the things which are more than one. For many things, for more than one person, more than one thing, we make use of plural nouns. Like birds, if there are more than one bird, then we will make use of noun birds. Apples, bags, etc. So देखो, birds are flying in the sky. Apples are very sweet, है ना? Bags are filled with things, ऐसे करके. तो plural nouns के साथ we make use of are. Okay, now we will move on to the chapter. Kids, what are you doing right now? You are reading this book. हम अभी क्या कर रहे हैं? उस
को बताने के लिए, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग राइट नाउ करंटली, अभी जो क्रिया कर रहे हो आप, अभी जो एक्शन कर रहे हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए वी मेक यूज ऑफ present continuous tense. And to write the sentence in present continuous tense, we have to make use of these helping verbs is, am, are along with the ing form of verb. is, am, are के आगे ing form of verb आएगा ही आएगा. ठीक है, जैसे ये बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, रीड कर रहा है बुक, तो बोलेंगे यू आर रीडिंग दिस बुक, you are listening to me right now, you all are listening to me, you are watching my video and along with that you are also listening my voice. तो ऐसे बोलेंगे you are listening to me because you are doing that work currently, it is happening right now. I am talking to you like this. कोई अभी बात कर रहा है एक दूसरे से, तो ऐसे बोलेंगे I am talking to you, मतलब वो एक्शन अभी हो रही है, चल रही, खत्म नहीं हुआ है वो. We are practicing English grammar like this. Okay, so after, if you notice, underline words are, then ing form of verb, are then ing form of verb, listen का आएगा listening, am then ing form of verb talk, talking, am talk नहीं आएगा, I am talk नहीं आएगा, I am talking. We are practicing, practice का ing form आया है practicing. We are practice नहीं आया, we are practicing English grammar. Okay, like this. And I already revised about this, when to make use of is, am, are. If there is he, she or singular nouns, we make use of is. He is sitting in the ground, she is sitting in the ground. Child is the singular noun, child is sitting in the ground. My cat is sitting in the ground. I, with the pronoun I, we make use of helping verb am. I is नहीं आएगा, I are नहीं आएगा, I am आएगा. I am sitting in the ground. Okay, and with the pronouns we, you and they, we make use of helping verb are. यहाँ पे एक रह गया pronoun it. With the pronoun it, we make use of helping verb is. It is sitting in the ground, ऐसे करके. We are eating food, you are eating food. देखो are के बाद भी ing फॉर्म आया है, यहाँ पे is के बाद, सब के बाद क्या आएगा, वर्ब का ing फॉर्म आएगा. is, am, are के बाद में हमें जो वर्ब यूज करना है वो ing फॉर्म में यूज करना है. यहाँ पे eat है बेस फॉर्म, और ईट के आगे ing लगा देने से बनेगा ing फॉर्म. सिट है, सिट मतलब बैठना, sit, सिट, सिट के आगे ing लगा दो, sit, डबल टी लिखेंगे और फिर ing, SITTING, सिटिंग. ओके, वी आर ईटिंग फूड, you are eating food, they are eating food. Children is the plural noun, that's why we have to make use of helping verb are. Children are eating, और eat का ing form आएगा, eating food. Cows are eating food, cows is the plural of noun cow. Cow का plural क्या है, cows. That is why after cows we will make use of helping verb are. Cows are eating food. Now we will move on to the exercise. Exercise number 1. Look at the pictures and fill in the blanks with is, am, are and ing form of verbs. So हमें ये pictures देख रहे हैं, and according to the pictures and according to the noun given, we have to make use of these helping verb is, am, are, and then after is, am, are, we have to make use of ing form of the verb. So we have to guess the action, and they have already given the verb, base form of the verb. We have to write the ing form of that verb in the sentence. Okay, so look over here. One boy here is flying a kite. ये जो लड़का है यहाँ पर काइट उड़ा रहा है, तो इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है. वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दिस एक्शन with the help of present continuous tense. So the boy's name is Rashid. Rashid is a singular noun. Singular है ना? Yes. That is why after Rashid we'll make use of which helping verb? Is आएगा, am आएगा कि are आएगा. So after Rashid we'll write is. Rashid singular noun है ना, so after singular nouns we make use of is. Rashid is
व्हाट इज द एक्शन ओवर हियर? एक्शन वर्ड इज फ्लाई. तो बेस फॉर्म क्या है? फ्लाई. अभी वर्ब को ing फॉर्म में लिखो. सो फ्लाई के आगे ing लिख दो तो बनेगा ing फॉर्म ऑफ फ्लाई. व्हाट इज द ing फॉर्म ऑफ फ्लाई? फ्लाइंग. राशिद इज फ्लाइंग अ काइट. नेक्स्ट, सानिया, दिस गर्ल इज प्लेइंग अ बैडमिंटन. सो दिस इज द सिंगुलर नाउन. एक ही पर्सन है ना इसमें. देर इज ओनली वन पर्सन इन दिस पिक्चर. दैट इज वाई इट्स अ सिंगुलर नाउन. सानिया इज प्लेइंग बैडमिंटन. बेस फॉर्म क्या है? प्ले. तो हम प्ले नहीं एज इट इज यूज करेंगे. प्ले के आगे ing लगा के वी विल मेक यूज ऑफ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. सानिया इज प्लेइंग बैडमिंटन. नेक्स्ट, चिल्ड्रन. देर आर more than one children. There are many children over here in this picture. That means this is the plural noun. क्या है ये? Children is the plural noun. So after plural noun we make use of is, am और are. Is, am, are में से क्या use करते हैं? What we use after plural noun? We use is or are or am. So after the plural noun we make use of are. So children are. और आर के बाद आएगा ing फॉर्म ऑफ योर वर्ब. व्हाट इज ओवर हियर वर्ब? वर्ब इज वेट. WAIT, वेट. वेट मतलब राह देखना या किसी का इंतजार करना. सो वेट का ing फॉर्म होगा वेटिंग. चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस. ओके, लाइक दिस. समर्थ इज अ सिंगुलर नाउन. समर्थ के बाद आएगा इज. आफ्टर समर्थ विल मेक यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज. समर्थ इज. व्हाट इज द action word or verb? Here verb is write. So we have to make use of ing form of the verb write. So write का ing form आएगा WRIT. E निकाल देना है. WRIT ing. Samarth is writing in the notebook. Next, question number 5. I dash dash in the pool. So यहाँ पे help verb is, your verb is swim. The girl is swimming in the pool. तो swim का ing फॉर्म क्या बनेगा? SWIMMING. So there is a pronoun I. So after the pronoun I we make use of which helping verb? Is, am or are. Is, am, are में से क्या यूज करते हैं I के बाद? Obviously after I we make use of am. I am swimming in the pool आएगा यहाँ पे. Next, we are cleaning our home. यहाँ पे helping verb is clean. Here the base form of the verb is clean. After clean you have to make use of ing to form the ing form of the verb. And we is the pronoun. And here after we supposed to use are. Helping verb are आएगा we के बाद. We are cleaning our home. They. यहाँ पे क्या है प्रोनाउन? दे. सो ऑब्वियसली आफ्टर दे वी मेक यूज ऑफ आर. दे आर डैश डैश अप द ट्री. यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है या वर्ब क्या है? क्लाइंब. तो क्लाइंब का ing फॉर्म आएगा क्लाइंबिंग. दे आर क्लाइंबिंग अप द ट्री. नेक्स्ट, मनी डैश डैश द प्लांट्स. यहाँ पे वर्ब है वाटर. सो हमें इसका ing फॉर्म यूज करना है. और मनी के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा? मनी के लिए इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा? मनी इज द सिंगुलर नाउन. दैट इज वाई वी विल मेक यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज. मनी इज वाटरिंग द प्लांट्स. And now sentence number 9 and 10. I want you to complete sentence number 9 and 10 on your own. Now we will move on to the next exercise. Exercise number 2. There are some mistakes in given sentences. Replace the underlined words with correct words. So here there are few mistakes in the given sentences and they have underlined it, and we have to correct those mistakes and we have to write the correct form of the verb or correct form of the helping verb over here. यहाँ पे लिखना है करेक्ट फॉर्म. ठीक है, जो भी करेक्ट फॉर्म होगा वो यहाँ पे लिखना है. ing फॉर्म है या जो भी हेल्पिंग करेक्ट वर्ब आएगा वो यहाँ पे लिखना है. देखो, मिसेस गुप्ता आर नीटिंग अ स्वेटर. मिसेस गुप्ता से क्या पता चल रहा है? सिंगुलर है या प्लूरल है ये नाउन?
What do you understand from this noun? Mrs. Gupta is a singular noun or a plural noun? Yes, Mrs. Gupta is the singular noun. So after the singular noun, we supposed to make use of is, not are. Singular nouns के बाद is आता है, are नहीं आता है. तो यहाँ पे आएगा Mrs. Gupta is knitting a sweater. are हटा के क्या आना चाहिए? is. Mrs. Gupta is knitting a sweater. तो यहाँ पे is लिख दो. Second, I is watching television. I. So after the noun I, we make use of helping verb am. Yes, we make use of helping verb am after the pronoun I. So it is wrong. We are supposed to write over here am. I am watching television आएगा. तो यहाँ पे am लिखो. We are go to the Akshardham temple. We are. So after the helping verbs is, am, are, we make use of ing form of the verb. Go का यहाँ पे क्या आना चाहिए? ing form आना चाहिए. और इन्होंने go का base form ही लिखा है. go को go ही लिखा है, going नहीं लिखा है. तो हम यहाँ पे go के बदले लिखेंगे going. We are going to Akshardham temple. Next, I am wear my new dress. So after am, we supposed to make use of ing form of the verb. यहाँ पे verb क्या है? wear. तो wear नहीं आएगा, wear का ing form आएगा. So I am wearing a dress आएगा. I am wearing my new dress. मैं अपना नया ड्रेस पहन रही हूँ. My sister are reading a newspaper. So my sister, look at the noun over here. My sister is singular or the plural noun? Yes, it's a singular noun. So after the singular noun, we supposed to make use of helping verb is, not are. So my sister के बाद आना चाहिए is. So यहाँ पे लिखो is. My sister is reading a newspaper. Children is skating in the rink. So children is the plural noun. Children is the plural noun of singular noun child. So children, after the children, we make use of are because it's the plural noun. So children are skating in the rink. are आएगा यहाँ पे. And I want you to correct sentence number 7 and 8 on your own. Okay. Now look at over here. Look at the picture and describe it in the present continuous tense. So I will describe the picture first. Here the annual function of some school is going on. Few children are performing the drama on the stage and teacher is doing the announcement about their performance. Teacher is also behind the desk and describing about their drama. Okay, teacher is doing MC over here and these children are enacting in their ड्रामा. सो आपको इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब इवेंट्स के बारे में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में डिस्क्राइब करना है. कि किसी स्कूल का एक एनुअल फंक्शन हो रहा है तो आप लिखोगे देयर इज एन एनुअल फंक्शन ऑफ सो एंड सो स्कूल. चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. दे आर परफॉर्मिंग द ड्रामा. Some children are enacting in that drama. ऐसे करके आपको describe करना है about this annual function. Okay, and you have to write everything in the present continuous tense. Present continuous tense में ही सारे sentences होने चाहिए. तो आपको ये लिखना है on your own. Okay, आपको अपने मन से लिखना है. And if you are not able to write it on your own, then I will send you the screenshot of that exercise. Okay, but first I want you to attempt it on your own. Okay, and if you have any doubts or queries, you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.